This is the story of an outlaw who runs with his gang and has been with his gang since he was 14. Someone who is so loyal to his gang but has a very 50-50 image. किसी को पता नहीं कि what to make of him. I think you know what I'm talking about. But for those of you who don't, this is the story of Arthur Morgan. The story of Red Dead Redemption 2. स्पॉइलर अलर्ट, इस गेम में मैं काफी चीजें स्पॉइल करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि मेन स्टोरी किस तरीके से प्रोसीड करी थी। तो अगर तुमने ये गेम पहले नहीं खेली और तुम्हें स्पॉइलर से बहुत डर लगता है तो आई वुडंट एडवाइस यू वॉचिंग दिस वीडियो। गेम स्टार्ट होती है NBC की हम अपनी गैंग के साथ एक स्नो स्टॉर्म में फंसे होते हैं। हमें एक जगह ढूंढनी होती है रेस्ट करने के लिए और अपना कैंप सेट करने के लिए कुछ दिनों के लिए। बट वी आर नॉट ट्रैवलिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि बढ़िया हॉलीडे पैकेज लेकर चलो घूम के आते हैं। वी आर एक्चुअली रनिंग फ्रॉम द लॉ। ये सब हुआ होता है ड्यू टू अ फेल्ड फेरी हाइस्ट एक जगह पर जहाँ का नाम है ब्लैक वाटर, जहाँ पर द गैंग लूजेस अ कपल ऑफ क्रूशियल मेंबर्स। We have another member of the gang जो अपने डेथ बेड पे होता है and by the time we reach a place to settle down, he dies. So the starting of the game itself establishes a very serious mood that this game is not going to be about killing people. This game is not going to be about roaming around freely in the world. This game is based on a concept. But वो concept क्या है? That is revealed later in the game. Let me introduce a couple of characters जो मुझे लगता है इस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड स्टोरी में एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करेंगे। नंबर 1, डच वैंडरलिन, द लीडर एंड वन ऑफ द इनिशियल मेंबर्स ऑफ द गैंग। एक ऐसा बंदा जिसको आर्थर ट्रूली अप्रिशिएट करता है एंड एज अ फादर फिगर देखता है। होजिया मैथ्यूज, द सेकंड मेंबर ऑफ द गैंग जिसको आर्थर रिस्पेक्ट करता है जस्ट एज मच एज ही रिस्पेक्ट्स डच। जॉन मार्स्टन, someone who was saved by Dutch when he was 12 years old and was raised by him as well, and he is as crucial to the gang as Arthur. Micah Bell, actually Micah saved Dutch's life in a random bar fight and was invited to ride along with the gang just to appear after a couple of months. And Arthur Morgan, who is well Arthur Morgan. डच की एक लाइन पूरी गेम में कांस्टेंट रही थी, that we need a little bit of money and then we can go out from this country and we can live peaceful lives. Spoiler alert, वो टाइम कभी भी नहीं आया। Usually क्योंकि डच के जितने भी प्लान्स थे after a certain period of time वो सारे के सारे poorly executed थे and most of them led to casualties. It was very common कि हमारी गैंग का कोई ना कोई member will be dead after a certain heist is planned. Davy's dead. Now, इंटरनेट पे बहुत बड़ी डिबेट है कि is Dutch a good person or is Dutch a bad person. We will not get into that because that is not the point of this video. Maybe I'll make another video on that. But Arthur, respecting Dutch, हमेशा उसके decisions को appreciate करता था, respect करता था and used to execute it with him. Arthur का एक रूल था कि he will do the work for money if he is paid handsomely. And usually इसलिए वो डच के साथ जाता था because not only he wanted money but the whole gang wanted money to run. As we keep going on in the game, due to the law, and they have a very fancy name, the Pinkertons, we have to keep changing locations of the camp and keep a low profile. एक instance भी होता है जिसमें they reach our camp and they offer Dutch कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारी पूरी गैंग को कोई कुछ नहीं बोलेगा। But the gang being loyal, उन्होंने शांति से डिटेक्टिव को बोला कि जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते शांति से वापस चले जाओ। पिंकरटन्स पूरी गेम में विजिट्स करते रहते हैं एंड दे कीप मेकिंग आवर लाइव्स मिजरेबल। दे कीप फाइंडिंग डच, बी इट थ्रू पोरली एग्जीक्यूटेड बैंक रॉबरीज, ट्रेन रॉबरीज से स्टेज कोच रॉबरीज जो मैंने तुमको पहले बताया था, which are all included in Dutch's poorly executed plans. बट सिर्फ पिंकरटन्स नहीं है जो हमारे पीछे पड़ते हैं। There is another gang named O'Driscolls, जिनके लीडर का नाम होता है कोम ओड्रिस्कल। These people are the gang's sworn enemy. कोम और डच का 36 का आंकड़ा है। कोम killed someone जिसको डच प्यार करता था and Dutch killed his brother. तो पूरी गेम में we are attacked from two sides and there is no saying if we can outlive them all. And also we meet a person called Leopard Strauss who lends out loans to needy people. But एक twist है, स्ट्राउस लोन उन लोगों को देता था जो लोग लोन वापस ही नहीं कर सकते, ताकि उनसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेके ज्यादा लोन्स ले लिए जाएं। Obviously people were not able to pay back and आर्थर को भेजा जाता था डेटर से कलेक्ट करने। वहीं पर आता है द फेमस मिशन
जहां से आर्थर को ट्यूबरकुलोसिस मिलता है फ्रॉम थॉमस डाउन्स हु हैज ट्यूबरकुलोसिस एंड कफ्स द इन्फेक्टेड ब्लड ऑन हिम। इसी मिशन में सैडली आर्थर को ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसफर हो जाता है एंड हम आगे देख सकते हैं कि कैसे ट्यूबरकुलोसिस ruined his life. Stay right there. So we go to a town called Strawberry जहाँ पर हमको डच जाने को बोलते हैं क्योंकि if you remember Micah is locked in a prison. We eventually break him out of the jail, killing almost everybody in Strawberry. Micah decided to lay low for a while but eventually वो गैंग में वापस आ जाता है. Now here is my theory. जैसे ही माइका गैंग में वापस आता है माइका डच को मैनिपुलेट करता रहता है एंड उसके साथ पूरी प्लान रॉबरीज में जाता रहता है। होज़ेया हर बार डच को वार्न करता है कि दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन for him or the gang, but Micah somehow manipulates Dutch and everything goes south every time. Because of this, the Pinkertons are also able to keep a track of us because we are the only gang जो poorly executed robberies करता रहता है। Later in the story reveal होता है कि Pinkerton detectives ने माइका को पकड़ लिया था and माइका ने completely सब कुछ बता दिया था उनको। So Micah was the rat. माइका की वजह से इतने सारे मेंबर्स मरते हैं इंक्लूडिंग होज़ेया मैथ्यूज। उसकी वजह से हमारी गैंग जो एक फैमिली की तरह थी डरने लग जाती है नॉट नोइंग व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। आर्थर एक डिसीजन लेता है उस टाइम पे। ही स्टार्ट्स टेलिंग एवरीबॉडी टू रन अवे फ्रॉम द गैंग बिकॉज ही बिलीव्स दैट द टाइम ऑफ आउटलॉज इज गॉन एंड आउटलॉज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। देयर इज ओनली रिस्पेक्ट for scholars and hard-working individuals. Also, by this time, Arthur का tuberculosis becomes worse and he is not even able to run properly or drink or eat certain foods. The main strength of the gang is pretty much dead at this point. Everything is chaotic and the Pinkertons find the gang's final hideout and decide to swarm them with hundreds of each other. आर्थर और जॉन एक साथ भागते हैं and Arthur in the end tells John to run away with his family because he is the only one who can make it out. He has a reason to live, he has people to protect. Arthur doesn't have any. इस पॉइंट पे Dutch stops believing Arthur. Micah is obviously a rat and most of the people in the gang are dead or either have ran away या फिर उनको आर्थर ने फेंक के बाहर निकाल दिया। John runs away with his wife and son and then we have, if not the most emotional sequence of the whole game. Arthur and Micah have a fist fight and considering Arthur को almost death level tuberculosis था, this guy can really fuck up a certain individual. Now based on the morale you have, you can either get a good ending or a bad ending. I got the good ending, so मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वही spoil करूँगा। What happens is because Arthur को बहुत last stage tuberculosis होता है, he is not able to fight till last and at last this is how he sounds while saying his final words to Dutch. I tried. In the end, I did. Dutch sees कि यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुई थी। He saw and Arthur tells कि Micah was the rat जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी गैंग ऑलमोस्ट या तो खत्म हो चुकी है या तो भाग चुकी है and there is no respect for the outlaws anymore. He was on his deathbed and he told Dutch that he gave him all he had. Dutch being speechless just walks away. So this was the story of Red Dead Redemption 2 summarized as quickly as I could. This game is certainly a masterpiece. If you are thinking to play this game, I'd say अभी start कर दो. The starting is a bit slow, but as the story progresses, frankly बताऊं तो मेरा साइड मिशंस करने का भी मन करता था। अगर गेम इतनी बड़ी ना होती तो मैं probably सारे साइड मिशंस भी पूरे कर लेता, पर लोगों ने पूरे करे हैं and even the side missions have an effect on the ending. Basically, you just shape Arthur's story as you progress in the game. Anyways, this was a whole story. Tell me if you liked the video by liking the video and commenting down below your thoughts. I would love to read them. मैं चलता हूँ फिर से कोई एक नई वीडियो बनाने।